since you all are passion players, right? आप लोग सारे लोग passion players हैं, entrepreneurs हैं, business owners हैं, तो मैं basics से start करूँगा, right? So I just wanted to give you 3 steps or 3 steps to achieve the success. And if you implement these steps in your whatever you're doing, area of work, आपको सफलता जरूर मिलेगी, right? So let us see how it works. So I straight away come into the insights. So first is you have to think right. Okay. So that is the first thing. If you want to achieve success, if in any of your venture, any of your endeavor, which you are doing as a business owner or as an entrepreneur, and I love the word, passionpreneur, you must have the passion, right? So at the same time, you have to think right. Think right. And once you start thinking in the right directions, you are covering most of your difficulties, challenges, and right here you are in that mode, right? So for thinking right, what is important? Your success begins in the mind, right? That's the first thing. कि once आपने सफलता आपको शुरू होती है, आपकी सफलता आपके दिमाग से शुरू होती है. It's not your money, not your resources. It's in your head, right? And once it's in your head, it's your state of mind. ये आपकी एक स्थिति है, right? And once you get this concept very clearly that success begins in mind, you start working towards the success, right? And your attitude takes you to the success, right? And as a lot of people, lot of researchers, a lot of intellectuals have already worked on this part, and they have come to the conclusion that once the mindset is clear, your half the things is done. So here I just want to talk to you about the attitude. Attitude is the main thing which will take you to the success. That's one. People say how important is attitude. Your attitude is very very important to get. Attitude को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उसको हम दृष्टिकोण बोलेंगे. आपका नजरिया क्या है, right? It's very important to know about your attitude, and you have what you do. आपका दृष्टिकोण क्या है. So your attitude determines your direction. The moment if you have a positive attitude, it will go towards your positive things or a positive beginning towards your venture or whatever businesses you are in, right? So attitude is very very important thing. So first thing is that your success is in your mind. Second thing is your important role which is played by your attitude. That's the two major things. So here I would like to give you what do you call as kind of a narrative where everybody has a mental window. If you're talking about attitude, you have a mental window. और वो mental window क्या है? आपने कभी सोचा है, कोशिश की है जानने की आपके दिमाग के अंदर एक mental window है, खिड़की है, right? And that खिड़की जो है वो हमारा attitude ही है. Our attitude is a mental window through which we see the world. हम दुनिया को उसी नजरिए से देखते हैं, right? So एटीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसे दिमाग की खिड़की की बात करते हैं, right? और वो उस खिड़की की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रूल करती है. सबकॉन्शियस माइंड में जैसे आप दो चीजें होती हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स वंस यू आर इन जर्नी ऑफ योर बिजनेस ओनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप. द मेंटल विंडो is subconsciously ruled by rule our mind, right? And your जो दिमाग की खिड़की की मैं बात कर रहा था, it becomes मजीद. जैसे आपके घरों की खिड़कियां जो है वो over the period of time dirt आ जाती है, अगर आप उसको साफ नहीं करोगे तो आपका घर गंदा हो जाएगा, आपकी खिड़कियां गंदी हो जाएंगी. उसी तरह से आपकी मेंटल विंडो जो है, जो एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, that becomes smudgy and dirty over the period of time. तो इसको क्या करना है, इसको हमें बीच बीच में टाइम निकाल के क्लीन करना होता है, राइट? एंड वंस वी स्टार्ट क्लीनिंग इट एंड we understand this concept very clearly, then and when we come into the mode of cleaning that mental window, that gives you an idea, and that gives you a direction of going towards
your goal or whatever dreaming you're doing about your profession, right, or your business, or whatever goal setting you have been doing. So here I would like to tell you that commitment is very important. The power of commitment is very important here. If you clean your window, and your attitude plays a very important role in cleaning that window. The attitude and success are correlated. How it is correlated? Whatever success principles you have, whatever you have, your own success principles, you have your own parameters, you have your intellectual thinking, whatever you have, whatever you thought of a success principle, whatever you have read, whatever you have gathered knowledge over the period of time, जो कुछ भी आपने knowledge अपने पास रखी है, whatever आपने जो create किया है, एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक आप सक्सेस नहीं जो है वो अचीव कर पाओगे. So without the positive attitude, you simply cannot follow whatever principles of success you have made, right? तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. एंड इफ यू कंबाइन पॉजिटिव एटीट्यूड विद द सक्सेस प्रिंसिपल जो भी आपने बनाए, जो मैंने अभी बात की, वी कैन टॉक एट अ लेंथ एट अ लेटर स्टेज. Then when you combine your positive attitude with your success principle, then you become unstoppable, right? Unstoppable. And we are here unstoppable, right? I think it's a group is called unstoppable passion prayers, right? So your attitude and success are correlated. So let us go further. What it say? Second insight is coming. First was think right. Second is speak wise. Speak wise, what I mean to say with speak wise? Speak wise, that means that your words have power. Whatever you are saying, whatever you are speaking, you are creating a kind of a power within you. So आप अपने शब्दों का जब चुनाव करते हैं बोलने के लिए, तो उसको बहुत importantly देखना चाहिए. तो second insight is speak wide, speak wise. Your words have incredible power, and words आपके क्या करते हैं? आपके belief system जो है उसको reinforce करते हैं. अब जब वो बिलीफ सिस्टम को रीइंफोर्स करते हैं, तो वो बिलीफ्स जो है आपकी रियलिटी में बनते हैं, राइट? आपका जो आप पहले वो सोचते हो, वो बिलीफ क्रिएट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसको आप रियलिटी में लेके आते हो. देन जस्ट रिलेटेड विद द एटीट्यूड कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए. सो योर बिलीव्स क्रिएट्स रियलिटी. सो थॉट कम्स. थॉट को आप वर्ड में क्रिएट करते हो, वर्ड्स को आप बिलीफ में क्रिएट करते हो, बिलीफ को आप एक्शन में क्रिएट करते हो, एंड वंस यू आप जो आपके एक्शन में जो क्रिएट करते हो वो आपका रिजल्ट आता है. व्हाट एवर वेंचर यू आर इन, अगेन सेइंग दैट किसी भी बिजनेसेस में हो आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, कि जो भी आप बात करते हैं, जो भी आप क्रिएट करते हैं, आप अपने वर्ड्स में बहुत पावर है, राइट? सो दिस इज अ सेकंड इनसाइट, एंड क्वेश्चन विल डू इट लेटर. And as far as possible, one has to do self talk. जब हम करते हैं, I don't want to do much of learnings on self talk. हम बाद में बात करेंगे. So जब हम self talk की बात करते हैं, तो use positive self talk as far as possible, as often as possible. Don't give messages to your mind which is coming in a negative sense. You have to replace it. You have to transform your belief system in order to get the success, and in order to whatever you're doing business, right? So words and words have accountability, as you have been seeing it. So words have accountability. Be accountable to your words. Whatever you are speaking, whatever you are creating by speaking those words, you have to be accountable to those words. And make a statement of your goals. This is very important. Once we do in the mode of goal setting, we will be able to know that how we have to make a right statement to our goals. And we have to limit it, those goals which are very important to you. You have to create a kind of a list where you have to write down कि कौन से goals आपके important है, कौन से urgent है, कौन से short term है, कौन से long term है, right? And once you
come in that mode of identifying, creating, और अपने लिए आप goals बना लेते हो, अपने business के लिए goals बना लेते हो, तब आपका काम आसान हो जाता है. आप जो भी काम करोगे, आप उस mindset से काम करोगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी, right? So here I'll talk to you, talk about basically words and emotions, how it is correlated, because our words affects our emotions. That is a very very important, that जो भी आप बोल रहे हो उससे हम एक इमोशंस जनरेट कर रहे हैं. अगर आप अपने लिए अच्छा बोल रहे हो, यू से यू गुड मॉर्निंग, कोई मुझे गुड मॉर्निंग बोलता है तो पूछता है हाउ आर यू, so I say I'm on the top of the world, right? Once I say I'm on the top of the world, I feel that I'm on the top of the world. So give the message to your mind that you are on the top of the world, you are top of your business, you know. So मैं हूँ, बहुत अच्छा हूँ और बहुत मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ. So your words affects your emotions, and the moment you see those words, you say those words, आपकी body उसी हिसाब से react करना शुरू कर देती है. So you have to lower the intensity of the negative emotions. That's the insight I'm trying to give it to you. And intentionally you have to select the heightened positive emotions. अगर positive emotions जब तक नहीं आएंगे तब तक आप वो create नहीं कर पाओगे, whatever business you're trying to create. So feel good about those words. वैसे ही शब्द बोलिए जो कि आपको positive emotions में create करते हैं, और positive emotions जो है आपको एक सफलता की तरफ लेके जाते हैं. तो the point number 2 is speak wise. Point number 1 was think right. Second is speak wise, and third is act purposefully, right? This is also very important, that you keep on trying, you get out there and fail. If you're afraid of failure, you'll not be able to achieve the success. So that mindset has to be there for the business owner. Either ये mindset तो सभी का होना चाहिए, और especially जब आप businesses में हैं, passion players हैं या entrepreneurship में हैं, तो this is very important कि आपको you have to express yourself, you have to experiment, you have to go there and do it, even if आप फेल हो जाओ. लोग ट्राई नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? कि दे हैव अ फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मेरे को दिक्कत होगी, तो वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं. सो you have to experience this even if you fail. Be ready to reach to a meaningful target, even if if you fail. There is nothing wrong in failure, and you have to be very very clear that अगर आप फेल हो गए तो आपको उससे परेशानी नहीं होगी, and अगर होती भी है तो you have to come out as fast as possible so that you can start it again. So there is no theory of overnight success. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि सभी लोग यहाँ पे हैं ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को. So there is no term as a overnight success. You have to आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उस मेहनत से गुजरना पड़ेगा. आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने पड़ेंगे, कंपनी के गोल सेट करने पड़ेंगे, आपके अपने बिजनेसेस के गोल सेट करने पड़ेंगे, टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, राइट? And the best thing is that what you can do is you should keep on trying. You should never give it up. And once you learn this, that you don't have to give it up, you see the results yourself, right? So I'll just go through. I would ask you to either take a picture of this slide. Ask yourself some key questions when you are in that mode of entrepreneurship. Are your timetable is unrealistic? You have to do your SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threats की हम बात कर रहे हैं. So ask yourself some key questions. Are your timetable is unrealistic? Am I truly committed? Because power of commitment की मैंने first slide में बात की थी. The second question is, am I truly committed? Do I have too many discouraging people around me? Around, right? तो ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं. जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, आपको आंसर्स आप खुद ब खुद मिलते जाएंगे, और अपने आप के बारे में आप जानते जाओगे, और आप जो कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, उसको आप एक नए डायरेक्शन के साथ, एक नए इंसाइट्स के साथ करोगे. Am I preparing to succeed? क्या मैं सफलता के लिए तैयार हूं? It's very important question to ask yourself, in fact. And and the best thing is, I am really willing to fail.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से पूछना, एम आई रियली विलिंग टू फेल? अगर आप फेलियर के लिए तैयार नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आपको आने वाली है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर, है ना, एंड फेलियर जो है आपको एक मोटिवेशन देगी आपको दोबारा से वापस आने के लिए। सो हियर, since we are all passion players, this is the last slide. The power of networking and for your businesses is power of networking, which we are doing right now here. It's very, very important. You know, the development of relationship with people with mutual benefit, right? Which we are trying to achieve with this kind of a platform. The power of networking when you are there as a business owner or as an entrepreneur is very, very important. So what are the benefits, the likely benefits for this? If you network, and if you network wisely, you generate new clients and new business leads, right? And this becomes very, very important when you start your journey of entrepreneurship or passionpreneurship, and helps in finding the right people for critical positions. Suppose आप अपने company के लिए even for अगर आप कुछ ऐसा तैयार कर रहे हो या कुछ अपनी कंपनी के लिए कुछ स्टाफ ढूंढ रहे हो, so you can get some referrals, right, which we saw in these kinds of meetings, right? Provides valuable information and resources, जैसे अभी शिविल जी ने हमारे साथ शेयर किया है. So for a corporate, it's very, very important information that such kind of products are also available. एंड रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं. असिस्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. आपकी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी आ रही हैं, चाहे वो बिजनेस में आ रही हैं, हो सकता है कि ओवरऑल प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हो, वो आपको इस तरह की नेटवर्किंग से आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज मिल जाए, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएं, कुछ इस तरह से जो और ऐसी एक बॉन्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात कि एक बॉन्डिंग जब हम क्रिएट करते हैं, इट टेक्स यू टू वेरी हायर लेवल ऑफ नेटवर्किंग, राइट? So these are the benefits, and thank you so much. I have a limited time, so this is all from me right now. We can always connect it for a question and answer session if you feel like. All right, thank you so much.